Hello students, this is Vikanshi Sharma and today we are going to study the various orders of reactions and various kind of reactions which comes under the chemical kinetics. So there are basically four or five kind of reactions which are so common and mainly people used to study only these. There are some also at higher levels, but for initially we only have to study four of them. So let's start one by one. First one is zero order reaction. As the name indicates, it is zero order. That means इसकी जो power होगी, concentration की power, that would be zero. So according to this, rate of reaction is directly proportional to the concentration. Here is the concentration, here is the proportionality constant, and the power of concentration is zero. This is the zero order reaction. तो अगर हम zero order reaction की बात करें तो zero order reaction वो होती है जिसमें power of concentration is zero. So according to this, the rate is directly proportional to or equals to the k. That means rate constant. जो आपका rate constant होगा उसके बराबर आपका rate of reaction होगा. That means there is no effect of concentration on the rate of reaction. This is the zero order reaction, and as per zero order reaction, the various factors which will affect it are the solubility or the temperature and various other things, but concentration is not a part of the factors which are going to influence it. So when it comes to zero order reaction, first thing you must remember is in zero order reaction, rate of reaction is only dependent on the rate constant value. Okay, the second point, in the zero order reaction, the unit of rate constant is moles per liter per second. ओके, दैट मीन्स अगर आपके पास में कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है एंड यू डू नॉट नो कि उसके अंदर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है, सो यू विल गो फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड यू विल डिटरमाइन दैट इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और वॉट एवर इट इज. Okay, so this is the zero order reaction, the reaction in which concentration has no role in the rate of reaction. This is the zero order reaction. Second one is first order reaction. In first order reaction, as the name indicates, it is first order. That means the sum of power of concentration is 1. That means the rate is directly proportional to the concentration and the power of concentration is 1. So rate is equals to Ka. Here concentration has a major role in deciding the rate of reaction. That means जो आपकी rate of reaction होगी उसे decide करने के लिए आपका concentration major role play करेगा. आप जितना ज़्यादा concentration increase करेंगे, the rate will increase, the concentration will decrease, then the rate of reaction will also decrease. So this is a first order reaction and the unit of rate constant here is per second. That means second inverse. If the unit of rate constant is given and nothing else is known, then you can determine कि हाँ अगर rate constant की value second inverse है, then definitely it is a first order reaction. Our next reaction is second order reaction. As the name indicates, second order means the sum of concentration, power of concentration is 2. So there are two conditions. If there is only one reactant, then its power is 2. And if there are two reactants, then definitely they both are having equal concentrations. Rate is equals to, here is the K. If there is only one reactant, then the power of this reactant is 2. Or if there are two reactants, then power of both is 1 each. दोनों की power एक एक होगी. So this is the second order reaction. The major thing which you must remember is that in second order reaction, if both of the reactants have the same power, that means the rate of degradation of both reactants is same.
ये पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट है तो जितनी ज्यादा तेजी से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसकी डबल पावर से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग the concentration 2 times, then the rate of reaction will increase 4 times because it is giving you the square value. Got my point? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। द लास्ट रिएक्शन इज द स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो हमें इस यूनिट के अंदर फर्दर पढ़नी है। एज द नेम इंडिकेट स्यूडो जीरो ऑर्डर, दैट मीन्स एक ऐसी रिएक्शन जो आपको लगे जीरो है बट इट इज नॉट जीरो। यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आप लोग ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट देयर आर सम कंडीशंस जहाँ पे हमें ये फील होगा दैट द रिएक्शन इज concentration independent, but in reality no, it is not concentration independent, then that reaction is known as pseudo zero order reaction. For example, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यू आर यूजिंग अ सस्पेंशन, आपने एक सस्पेंशन लिया है, उस सस्पेंशन की पर्टिकुलर सॉलिबिलिटी है, ठीक है। तो जो आपने सस्पेंशन लिया है, यू हैव एडेड 5 mg ऑफ ड्रग एंड अमंग दिस 5 mg 3 mg गॉट सॉल्युबल। 3 mg जो आपकी ड्रग थी वो सॉल्युबल हो गई एंड द 2 mg इज रिमेनिंग, इट इज इनसॉल्युबल। 2 mg आपकी इनसॉल्युबल है। सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, कंसंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होगी, कंसंट्रेशन का मतलब है जो आपके 3 mg ड्रग है वो थोड़ी देर बाद में 2.5 mg रह जाएगी, ठीक है। उसे 2.5 mg होते ही जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम तो होता, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज द 2 mg इज साइमल्टेनियसली डिजोल्विंग। जो 2 mg है उसका 0.5 mg डिजोल्व हो गया फिर से। तो कंसंट्रेशन के साथ में रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पा रही। इन दिस कंडीशन इट इज नॉट बी सेड दैट आपके कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा बट कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉल्युबल ड्रग और इनसॉल्युबल ड्रग विल सेट एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। जितना सॉल्युबल ड्रग डिकम्पोज होगी, डिग्रेड होगी, इनसॉल्युबल उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबलाइज होकर एक इक्विलिब्रियम सेट कर लेगी, एक अमाउंट को डिजोल्व कर लेगी। जैसे ही ये 2 mg ड्रग कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगी, उसके बाद में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। तो initially it is assumed that it is a zero order reaction, but in reality no, it is not a zero order reaction, it is a fully proved first order reaction. So these are the 4 type of reaction which we are going to study in this unit. In our next lecture I'll teach you about the zero order reactions in detail, about its half life, shelf life and its basic derivation. Thank you.